Hello, just wait. Hello everyone. Good evening all of you. Hello everyone. Good evening to all of you. The topic of discussion is the carbohydrate chemistry part 2, that is glycosaminoglycan. Mainly it contains glycosaminoglycan GAGs, and this is important topic from the carbohydrate chemistry. You may get a essay cube. आपको इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है. जस्ट रिकैप करते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया. So we studied the classification of carbohydrate, in which we classify the carbohydrate depending upon the number of sugar units. मतलब शुगर यूनिट्स कितने हैं उस हिसाब से अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करें तो उसके चार मेन टाइप्स है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड. ऐसे चार टाइप्स है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड. मोनो मतलब सिंगल शुगर यूनिट विच कांट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, मतलब उसका फर्दर डिग्रेडेशन नहीं होगा. डाई मतलब दो शुगर यूनिट जब रहेंगे, मतलब दो मोनोसेकेराइड यूनिट जब कनेक्टेड रहेंगे बाय ए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, उसको बोलते हैं डाइसेकेराइड. डाई मीन्स टू. Oligo means 3 to 10. When the sugar units are 3 to 10 and connected by the glycosidic linkage, they are known as the oligosaccharide. Oligosaccharide. And poly means number more than 10. When the sugar units means the simple sugar units, they are more than 10. It is known as polysaccharide. And polysaccharides, they are further classified into homopolysaccharides and heteropolysaccharides. When homopolysaccharide, it is the meaning the number of the sugar units, they are same, matlab it is composed of same sugar. For example, ग्लूकोज 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 एंड सो ऑन. अगर ऐसा एक ही शुगर यूनिट से बने हुए हैं तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड. व्हेन दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट शुगर यूनिट्स, दे आर नोन एज हेट्रोपॉलीसैकेराइड, जो हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है. हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स और ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स, दे मेनली इन्वॉल्व्स द ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन. ये हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का. इसके पहले हमने डिस्कस किया, जस्ट वेट, दिस इज टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड एंड द म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस. मतलब इससे रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस. और एक आइसोमर हमारा पिछला बार का बचा है, वो हम कवर करेंगे. नाउ सी, monosaccharides, they are further classified on the basis of, मतलब depending upon the number of carbon and the functional group, whether it is aldehyde or keto group, they are classified as aldoses and ketoses. If number of sugar units, they are 3, it is known as triose, 4 tetros, 5 pentose, 6 hexose and 7 heptose. Okay, now these are the examples of monosaccharide जो हमने already discuss किए: glyceraldehyde, dihydroxyacetone, erythrose, erythrulose. ulose लग गया मतलब it is fructose sugar, it is ketose sugar, it is ketose sugar. पेंटोज का एग्जाम्पल है राइबोज, राइबुलोज या झाइलोज, झाइलुलोज. हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. सो दीज आर द कॉमन मोनोसैकेराइड्स. कॉमन मोनोसैकेराइड अपार्ट फ्रॉम ग्लूकोज, द मैनोज, गैलेक्टोज, दीज आर द इपीमर्स. ये हम आज दिखेंगे कि इपीमर का मतलब क्या होता है. एक सिंगल कार्बन अदर देन एनोमेरिक कार्बन पे जब वो डिफर करता है तो उसको बोलते हैं इपीमर्स. वो हम अभी आइसोमर्स में देखेंगे. देन डाइसैकेराइड, डाई मीन्स दो शुगर यूनिट,
When they are composed of two sugar units connected by the glycosidic linkage, it is known as the disaccharide. There are two types of disaccharide, reducing and non-reducing. Reducing disaccharide includes the lactose and maltose. Lactose, it is made up of galactose plus glucose. Maltose, it is composed of glucose plus glucose. Here alpha 1 for glycosidic linkage, here beta 1 for glycosidic linkage in the lactose. Sucrose is a non-reducing sugar and trehalose is a non-reducing sugar. Sucrose, it is made up of glucose. ये glucose plus fructose से बना हुआ है. Here the bond is alpha 1 beta 2. Alpha 1 beta 2 glycosidic linkage. Now alpha 1 of the glucose and beta 2 of the fructose. Okay, second carbon of fructose means both the functional group, यहाँ का aldose और यहाँ का keto group, both the groups they are involved in the bond formation, so there is no free functional group. That's why it is non-reducing sugar. It is also known as invert sugar because initially it is levorotatory. Initially it is weak dextrorotatory, but because of fructofuranose hydrolysis, मतलब इसका ब्रेकडाउन अगर हो गया तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता और फ्रुक्टोज जो है स्ट्रॉन्ग लिवोरोटेटरी कंपाउंड है, उसके वजह से ये लिवोरोटेटरी बन जाता. दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वो हम आज देखने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो उसके वजह से इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं सुक्रोज को. जो टेबल शुगर हम चाय में डालते हैं या टेबल पे मतलब हमारे घर में यूज होती रूटीनली, दैट इज केन शुगर, दैट इज सुक्रोज. एंड ट्रिहालोज, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट and here bond is alpha 1, both the aldehyde groups, functional groups, both the aldehyde or functional group of glucose, they are involved in the bond formation, so this is also a non-reducing sugar. So reducing property, reducing sugars, they give the Benedict test positive. Non-reducing sugar, they do not give the Benedict test positive. Apart from this, the oxazone property means formation of crystals when it is treated with phenylhydrazine. It is known as oxazone formation and the crystals are seen under the microscope. आपको spotting में भी रहते हैं अलग अलग shape के oxazones. So oxazone it is a property of reducing sugar when it is treated in hot alkaline medium with phenylhydrazine. It gives certain shaped crystals. एक particular shape के crystals देते हैं. जैसे कि lactose जो है, lactose give powder puff shape. It gives लैक्टोज गिव पाउडर पफ शेप्स ओसाजोन क्रिस्टल्स. ये स्पॉटिंग में माइक्रोस्कोपी में एक मार्क के लिए आपको रह सकता है. दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ लैक्टोज. लैक्टोसाजोन बोलते हैं इसको. माल्टोज गिव सनफ्लावर शेप और पेटल शेप. पेटल शेप ओसाजोन्स. माल्टोसाजोन स्टार शेप, पेटल्स शेप, sunflower shape. Maltose gives the sunflower shaped oxazone. Non-reducing sugar does not give oxazone because carbon number 1 and 2 they are involved in the bond formation here. And here the sucrose and the trehalose, these are the non-reducing sugar. It is a property of reducing sugar. Property of reducing sugar. And glucose, fructose and mannose, they give similar shaped oxazones. They are known as needle shape or broom shape. झाड़ू जैसा या needle shape oxazones बोलते हैं ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज. सो देयर इज वन क्वेश्चन व्हाई ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज गिव सिमिलर शेप्ड ओसाजोन. ये हमने डिस्कस किया था. इसमें ये रीजन है क्योंकि दे डिफर अराउंड द C1 and C2 and C1 and C2 they combine with the phenylhydrazine to form a common structure. That's why the shape of oxazone is similar in all these monosaccharide glucose, fructose and mannose. Okay, so this is reducing, this is non-reducing. Lactose is also known as milk sugar. Sucrose is known as table sugar, invert sugar, and it is a non-reducing sugar. उसके बाद में हमने डिस्कस किया था होमोपॉलीसैकेराइड्स. होमोपॉलीसैकेराइड पहले तो पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड का मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मेनी. व्हेन द शुगर यूनिट्स आर मोर देन 10, जब ये 10 के ऊपर रहेंगे उनको बोलेंगे पॉलीसैकेराइड. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर यूनिट्स आर सिमिलर लाइक ग्लूकोज एंड एन नंबर ऑफ ग्लूकोज आर देयर, in that case when it is composed of glucose or when it is composed of fructose, as in case of inulin, it is fructose polymer. Inulin is the fructose polymer. तो ऐसे केस में उसको फ्रुक्टोसैन बोलते हैं, इसको ग्लूकोसैन बोलते हैं. So when it is composed of similar sugar unit, they are known as homopolysaccharides.
तो ये उसके एग्जाम्पल है होमोपॉलीसैकेराइड्स के। इस पे आपको ऐसे क्यू आ सकता, दैट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। एनुमरेट होमोपॉलीसैकेराइड्स विद देयर फंक्शंस इन शॉर्ट, विद देयर फंक्शंस इन शॉर्ट, क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रान, इनुलिन, काइटिन। Starch, glycogen, cellulose, dextrine, dextran, inulin, chitin. Now starch, it is a storage form of carbohydrate in the plant. It is made up of glucose unit, repeating glucose unit. There are two major structure in the starch structure, that is amylose and amylopectin. Amylose, it is a straight chain linear molecule. Glucose, they are attached in by the alpha 1,4 glycosidic linkage in a straight chain. मतलब ऐसे glucose glucose, glucose, glucose. So straight chain, and the bond is alpha 1,4 glycosidic linkage. Alpha 1,4 glycosidic linkage. And amylopectin is a branch molecule. Here there is branching. Suppose G, glucose, glucose. So here the branch is, the bond is alpha 1,6 glycosidic linkage at the branching point. This is 1,6 glycosidic linkage. This is 1,4 glycosidic linkage. So this is difference between the amylose and amylopectin. It is straight chain, it is branch chain. It constitute 20% of the total. It constitute 80% of the total. There is alpha 1,4 glycosidic linkage in the amylose structure. There is alpha 1,4 in the linear chain, while at the branch point, only at the branch point, क्योंकि यहाँ पे फिर से alpha 1,4 रहेगा. Okay, only at the branch point it is alpha 1,6 glycosidic linkage. Water soluble, not soluble in water. Amylose and amylopectin constituent of the starch. Starch is a plant carbohydrate, storage form of the carbohydrate in the plant. Glycogen, it is a storage form of the carbohydrate in the animals. Further branching of amylopectin, इसको और branch किया, so branching makes the molecule, इन केस ऑफ ग्लाइकोजन बोर ब्रांच होने की वजह से, मोर डेंस ब्रांचिंग होने की वजह से, इट मेक्स द मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट, ग्लोबुलर एंड लेस स्पेस कंज्यूमिंग. उससे की वजह से काफी कम स्पेस कंज्यूम हो सकता है. इट इज स्टोर्ड, द कार्बोहाइड्रेट इट इज स्टोर्ड, ग्लूकोज इट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल. This is storage form of the carbohydrate and it provides the energy in between the meal. हम दो टाइम का जो खाना खाते हैं उसके बीच में शुगर लेवल जो मेंटेन होती है, it is because of glycogen, degradation of glycogen, glycogenolysis. lysis मतलब डिसोल्यूशन, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन से एनर्जी प्रोवाइड होती है, ग्लूकोज प्रोवाइड होता है इन बिटवीन द मील, दो मील के बीच में. Okay, so alpha 1,4 in the linear chain, alpha 1,6 at the branch point, similar structure as that of starch, but it is more compact, more branch structure, and it is present in muscle and liver of the animal tissues. It is present in muscle and liver in the animals. Cellulose, it is not digested by the humans. There is linkage in the cellulose that is known as beta 1,4 glycosidic linkage in between the glucose molecule. So it is not digested by the humans, so it act as a dietary fiber. It act as a dietary fiber. Dietary fiber हमने अलग से डिस्कस किया था, जिसमें बहुत सारे नाम हमने डिस्कस किए थे. तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे 2-3 मिनट में, जस्ट वेट. सेलुलोज, it is the plant component not digested by the humans because there is no enzyme which can cleave the beta 1,4 glycosidic linkage in the cellulose. So it acts as a dietary fiber. Dextrine, it is degradation, partial degradation product of starch. Degradation product of starch. स्टार्च जब हाइड्रोलाइज होता है डाइजेशन के प्रोसेस में, so it forms dextrine and then it forms maltose and then it is converted into glucose. Starch, dextrine, maltose. So dextrine is a partial degradation product of starch. Then dextran is the high molecular weight branched carbohydrate composed of glucose unit. It is having the very high molecular weight and it is used as a plasma volume expander. जब भी प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है डेक्स्ट्रान. हाई मॉलिकुलर वेट ब्रांच कार्बोहाइड्रेट
इट इज यूज एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर इन द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तब ये डेक्स्ट्रान देते हैं, या तो पैरेंटेरल न्यूट्रिशन मतलब टोटल आईवी न्यूट्रिशन, जब गैस्ट्रेक्टोमी या कोई डिसीज हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, उस वजह से खाना अगर हजम नहीं हो रहा है, इन दैट केस, in case of indigestion, in that case total parenteral IV nutrition is given, so for that dextran is also useful. So it is plasma volume expander uh, at somewhat lower molecular weight around the 40,000. It is having the antithrombotic activity. Also dextran, it is used as a lubricant in the eye drops. So these are the uses of dextran. There may be a question in the viva, what is difference between dextrose, dextrine and dextran. Dextrose, dextrine and dextran. Dextrose is a D-glucose in a solution, उसको dextrose बोलते हैं. 5% dextrose लगा रहे मतलब ग्लूकोज लगा रहे, D-glucose. Okay, dextrine मतलब partial degradation product of starch, and dextran is the high molecular weight branch carbohydrate made up of glucose unit. Okay, then inulin, it is polymer of fructose. This is MCQ, it is polymer of fructose, and inulin, it is used in the measurement of glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate, also it is a dietary fiber. Also it is dietary fiber. Beta 1,2 glycosidic linkage is there. It is dietary fiber. Measurement of glomerular filtration rate, because it is freely filtered through the glomerulus, neither reabsorbed nor secreted by the renal tubule. It is inert compound, excreted unchanged. So that's why it gives the value closer to the glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate, this is an parameter. ये एक पैरामीटर है जो किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए यूज करते हैं. Okay, then chitin, it is composed of N-acetyl glucosamine, and it is present in the exoskeleton of some insect, also plant wall, fungus के wall में रहता है. So exoskeleton of some insect it is present, that is chitin. So this is in short revision of the that is homopolysaccharides. These are the dietary fibers. These are the name of the dietary fibers: cellulose, hemicellulose, lignin, pectin, gums, resistant starch, oligosaccharide, some oligosaccharide, lactulose. This is synthetic oligosaccharide composed of lact. Lact means galactose, and oolose, galactose plus fructose. It is composed of galactose plus fructose. It is synthetic, and it is used in the treatment of constipation. It is used in the treatment of constipation. Lactulose commercially widely used होता है lactulose का. The mechanism of dietary fiber is like they absorb the water, thicken the content of gastrointestinal tract, and by fermentation process. So this is mechanism of action of dietary fiber. So they increases the bulk of stool, relieves constipation, they decreases the absorption of glucose and cholesterol from the intestine. That's why they are useful in the management of diabetes mellitus, atherosclerosis, coronary artery diseases, and obesity. Apart from this, they prevent us from the gastrointestinal disturbances. For example, prevent us from diverticulosis and colon cancer. So this is discussion about the dietary fiber. Apart from this, we discuss the glycemic index. Glycemic index is nothing but the area under the glucose curve. It is the value which is given to certain food stuff as compared to when it is compared to the glucose ingestion. ग्लूकोज खाने के बाद जितनी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ती है उसके कंपैरिजन में अगर कोई हम टेस्ट मिल मतलब कोई भी कंपाउंड अगर खा रहे हैं तो वो देने के बाद कितनी ग्लूकोज वैल्यू बढ़ती है उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो इट इज ऑल्सो यूजफुल इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस एंड ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी.
Now wait. Now first we'll discuss the isomers, then we'll go for the glycosaminoglycans. पीसी पे नहीं ओपन हो रहा, सिक्योरिटी पर्पस के लिए पीसी पे बंद कर दिया है. हाय कुशग्र. हाय सौम्या, हाय खुशी, हाय सिद्धार्थ. एनर्जी एंड बेनेडिक्ट रिएजेंट एक ही रिएजेंट है जिसके कंपोनेंट रहते तीन, दैट इज सोडियम साइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड द कॉपर सल्फेट. तीन कंपोनेंट रहते हैं. बेनेडिक्ट रिएजेंट बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए यूज होता है. दिस इज ए टेस्ट फॉर द रिड्यूसिंग शुगर, कॉमनली यूज टेस्ट, बेड साइड टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन. सो ये जो था वो रिवीजन था. अभी तक जो हमने कवर किया वो पूरा रिवीजन था पिछले क्लास का. Now we'll start with the actual class, which includes the isomers of monosaccharides. And second important thing, we'll discuss the glycosaminoglycan. This is a very very important topic. Isomer में limited content आप करो, ज़्यादा content के पीछे मत भागो. Do the limited content for writing the short note, for writing the MCQ answer. Isomers of monosaccharide. Now see, isomers. एकदम सिंपल है. आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structure. Simple definition: difference in structure or difference in orientation of group in a structure. Difference in orientation of group in a structure. Same molecular formula but difference in orientation of group in a structure. So isomer, it can be a stereoisomer, it can be a functional isomer, functional depending upon the functional group. It can be a functional isomer, it can be a optical isomer. Optical isomer depends on the rotation of plane polarized light. That is optical isomer, they are known as optical isomer. Then they are also known as epimers. epimers जो कि वाइवा के लिए और MCQ के लिए important है. epimers. And the last one is the anomers. So these are the different isomeric forms of the different isomers of the monosaccharide. Stereoisomer, functional isomers, optical isomer, epimers and anomers. मैंने आपको पहले भी बोला था आप सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद रखो, बाकी कोई स्ट्रक्चर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. Okay, now stereoisomers, compound having the same molecular formula but having the differ in the orientation of group. They differ in the orientation of group. Differ in orientation of OH and H to the right and left. To the right and left. Now see, स्टीरियोआइसोमर एक स्ट्रक्चर बताता मैं. सी ग्लिसरल्डिहाइड, दिस इज CHO, दिस इज फंक्शनल ग्रुप इन द अल्डोज शुगर. दिस इज CH2OH, टर्मिनल अल्कोहल. दिस इज OH to the right, this is H to the left. OH to the right. When it is OH to the right, it is known as diglyceraldehyde. It is known as diglyceraldehyde. Now see the same molecular formula, different structure.
CHO, the OH group to the left, and this is terminal alcohol. So this is L-glyceraldehyde. They are mirror images of each other. So they are known as stereoisomer. They are known as stereoisomer. आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के साथ भी कर सकते हो. And this stereoisomers. So when they are mirror images of each other, they are mirror images of each other. In case of D-glyceraldehyde or in case of glucose, they are known as enantiomers. They are known as enantiomers. They are mirror image of each other. They are mirror images of each other. So they are known as enantiomers. Now see the glucose structure. See glucose structure. 6 कार्बन निकलना है. 3, 4, 5, 6. Okay. carbon 1 2 3 4 5 6. Now see, this is CH2OH, this is CHO, this is first carbon, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth, this is sixth. 6 carbon hexose, glucose का structure. Now see the OH group. So this is OH, H, OH, H, HOH, OH, H. This is structure of D glucose. ये मैंने बोला था ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है. अभी ग्लिसरल्डेहाइड के स्ट्रक्चर में क्या कर दिया आपने, बीच में के निकाल दिए, 3 ही कार्बन रहते ग्लिसरल्डेहाइड में. ठीक है. नाउ डी ग्लूकोज, ये याद रखना है, बस आपको यही स्ट्रक्चर याद रखना है और इसके हिसाब से बाकी स्ट्रक्चर निकालने हैं. डी ग्लूकोज. नाउ सी हियर L glucose. So D glucose, in case of monosaccharide, in case of the carbohydrate, D is prominent. D structure is the prominent. Now see here. It is CH2OH, it is CHO aldehyde group. Now see here, OH, OH, H, OH, H, H, OH. Now see this structure, it is known as L glucose, capital D, capital L. So see OH, OH group, OH group. Orientation of OH group towards the right, it is known as D glucose. Orientation of OH group towards the left, it is known as L glucose. D glucose, L glucose, they are also known as enantiomers. They are also known as enantiomer. इतना ही याद रखना है स्टीरियोआइसोमर में. स्टीरियोआइसोमर में मैंने क्या बोला था, stereoisomer compound having the same molecular formula but they differ in a orientation of group towards the right and left. Okay, if it is towards the right it is known as D, and if it is towards the left it is known as L. Orientation of OH group towards the right and orientation of OH group towards the left. So it is known as D-glyceraldehyde, L-glyceraldehyde. Same is for the glucose, D-glucose, L-glucose. These are known as stereoisomers. These are known as stereoisomers. Okay, now the functional isomers. See, functional. Functional isomers. Example, glucose and fructose. Means having the different functional group. Now see, this is 6. This is aldose, this is D-glucose, this is glucose, D-glucose or glucose, this is glucose. Now see, this is OH, H,
OHH, this is HOH, OHH. Now see the structure of fructose here. C, 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 C. Here CH2OH, 2OH. This is C double bond O. This is keto group. Now see the here, this is aldehyde group, this is keto group. This is structure of fructose, D-fructose, fructose structure. This is glucose structure. See the difference between, this is aldose, aldehyde group, aldose. This is keto group. This is keto group. So functional group they differ. बाकी का structure same है. आप निकाल सकते OH, H, OH, H, H, OH. Got it? So this is glucose, this is fructose. It is known as functional isomer. They functionally differ from each other. They differ from each other in terms of functional group. Aldehyde group, keto group. Aldehyde group, keto group. They are known as functional isomers. They are known as functional isomer. दो हो गया, functional isomer हो गया. Then small d, small l. Optical isomer. Optical isomer. Optical isomer मतलब small d and small l or plus and minus. It is dextrorotatory, dextrorotatory or levorotatory. Levorotatory. This depends on the rotation of beam of plane polarized light. When a beam of plane polarized light is passed through a solution containing it, through a solution containing it, it either rotated to the this plane polarized light. When it is rotated to right, it is known as dextro, small d, not capital D, and when it is rotated to left, it is known as levo. When dextrorotatory, levorotatory, small d, small l या पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. When a beam of plane polarized light is passed through the solution containing it, मतलब either it is small d glucose or small l glucose. अगर ये राइट की तरफ रोटेट होता है, beam of plane polarized light, when it is rotated to the right, it is dextrorotatory. When it is rotated to the left, it is known as levorotatory. So this is known as optical isomers. Then epimerism and epimers, it is very very important, and it is important in the Viva, it is important in the MCQ. What do you mean by the epimerism? Epimers. So they differ around single carbon atom. Around single carbon, but it is other than anomeric, मतलब functional group वाला नहीं, other than anomeric carbon. पहला वाला या functional group वाला नहीं, जिसको functional group रहता वो carbon नहीं. Differ around the single carbon other than anomeric carbon. They are known as epimers. Epimers. Example बताता हूँ. See. Now see, this is structure of glucose. This is CH2OH. This is aldehyde group. This is OH, H,
OH, H, H, OH, OH, H. This is structure of glucose. Glucose. Now glucose and galactose, they are epimer of each other, and glucose and mannose, they are epimer of each other. Now the depending upon the carbon they differ. This is, suppose this is mannose. This is also MCQ. Glucose and mannose, they are epimer at C2, and glucose and galactose, they are epimer at C4. C4 epimer. These are C2 epimers. These are C4 epimers. Now see in the mannose structure, this is first, second, third, fourth, fifth, sixth. First, second, third, fourth, fifth, sixth. See, same structure. Around the C2 they will differ. So here OH, here H. So this is only difference. Rest of the structure is same. Orientation of OH group differ around a single carbon other than anomeric carbon. मतलब पहला वाला जो फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच है उसको छोड़ के बाकी स्ट्रक्चर में कहीं पे भी अगर उसमें डिफरेंस है, दैट इज नोन एज epimers of each other. Okay, epimers of each other. Mannose, C2 epimer of glucose, and galactose, it is one, two, three, four, five, six. Now rest of the structure is same. C4, see the C4, here is the OH, this side is the H. Rest of the structure is similar. They differ around the single carbon atom other than anomeric carbon. They are known as epimers. The other important one is the D-glucuronic acid and L-iduronic acid. It is a C5 epimer. D-glucuronic acid and L-iduronic acid. आगे में काम है इसका. Now see once again. Now see here the penultimate carbon means carbon which is adjacent to the terminal primary alcohol. ये टर्मिनल अल्कोहल के पास में जो कार्बन है पेनल्टीमेट कार्बन, इन केस ऑफ द फिफ्थ कार्बन इन द ग्लूकोज स्ट्रक्चर, फिफ्थ कार्बन, द ओरिएंटेशन ऑफ OH एंड H, पेनल्टीमेट कार्बन, फिफ्थ इन केस ऑफ द ग्लूकोज, फिफ्थ कार्बन इन केस ऑफ ग्लूकोज, पेनल्टीमेट कार्बन, OH group and H group, orientation of OH and H with respect to penultimate carbon is important in the D glucose and L glucose. So this is D and L, capital D and capital L. Then functional isomerism means having the different functional group. Here aldehyde is the functional group, here keto is the functional group. Then optical isomer, small d, small l, dextrorotatory, levorotatory. And epimers मतलब एक कार्बन पे डिफर हो रहे हैं other than this anomeric carbon, they are known as the epimers of each other. For example, glucose and mannose, they are epimers of each other, and glucose and galactose, they are epimers at the C4 position. At the C4 position, they are epimers of the each other. So this is known as epimerism. And the last one, anomers. In the isomers, anomers. The isomers, they depend on the number of asymmetric carbon. Anomers here means the first carbon, means the carbon having the functional group. The first carbon, they differ around the first carbon having the functional group. Differ around first carbon means having the functional group. फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच हो रहता है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे रहता है वो कार्बन के स्ट्रक्चर में डिफर करते हैं, एनोमर्स. नाउ सी हियर एनोमेरिक स्ट्रक्चर, दिस इज हैवर्थ प्रोजेक्शन. नो नीड टू रिमेम्बर हैवर्थ प्रोजेक्शन, सिर्फ एक ही जगह पे आपको याद रखना है, एनोमर के जगह पे. दिस इज हैवर्थ प्रोजेक्शन. In the Haworth projection, now see, this is CH2OH.
this is now see here it depends on the whether it is towards the oxygen or away from the oxygen. When OH group is away from the oxygen, when OH group, this group is away from the oxygen, it is known as alpha. See, it is alpha. How alpha is written? There is cross in the alpha, cross for the remembering. There is cross in the alpha, so it is to on the opposite side. So OH is on the opposite side of the oxygen. So it is known as the alpha D glucose. It is known as alpha D glucose. And now see the structure, another structure. Now when it is toward the same side, when it is toward the same side, towards the same side of the oxygen, it is known as the beta D glucose. So this is known as beta D glucose. Now see one clinical importance of this alpha and D. This is known as mutarotation. When one is converted into another, it is known as mutarotation. And for the mutarotation, when one is converted, when alpha is converted into beta, one isomer is converted into another, it is known as mutarotation. And it needs near about 16 to 18 hours for the complete mutarotation. When we prepare a standard, लेबोरेटरी में हम जब स्टैंडर्ड प्रिपेयर करते हैं तो जो पाउडर फॉर्म में रहता है, जो पाउडर हम डालते हैं पानी में और स्टैंडर्ड बनाते हैं, पानी में मतलब डिस्टिल वाटर में डालते हैं और स्टैंडर्ड बनाते हैं, इन दैट केस इट इज इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन. इट इज इन द अल्फा कॉन्फ़िगरेशन. इट नीड्स to be converted into beta, it needs near about 16 to 18 hours. और हम GOD POD मेथड जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज पेरोक्सीडेज मेथड से एस्टिमेशन करते हैं ब्लड ग्लूकोज का, इट इज इट डिटेक्ट्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज. इट डिटेक्ट्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज, नॉट अल्फा डी ग्लूकोज. इट विल नॉट डिटेक्ट अल्फा डी ग्लूकोज, इट विल डिटेक्ट ओनली बीटा डी ग्लूकोज. तो ये मेथड से हम लेबोरेटरी में एस्टिमेशन करते हैं. तो लेबोरेटरी में जब भी स्टैंडर्ड बनाते हैं तो इट शुड बी ए स्टॉक सॉल्यूशन, इट शुड बी फ्रॉम द स्टॉक सॉल्यूशन. इसका रीजन ये है स्टॉक सॉल्यूशन से क्यों बनाना चाहिए, पाउडर से डायरेक्टली क्यों नहीं बनाने का. पाउडर से बनाने का पहले इनिशियली, लेकिन उसको टाइम देना पड़ता है. इफ यू इमीडिएटली प्रिपेयर ए ग्लूकोज स्टैंडर्ड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 100 मिलीग्राम परसेंट, 100 milligram per deciliter, immediately it will not give you value because it is in the alpha orientation. It is in the alpha orientation. एक वासुदेवन में अच्छा एग्जांपल दिया है. टेक्नीशियन को बोला कि तू प्रिपेयर कर 100 मिलीग्राम का स्टैंडर्ड प्रिपेयर कर, तो टेक्नीशियन ने 100 मिलीग्राम ग्लूकोज लिया और 100 ml डिस्टिल वाटर में उसको डिजोल्व किया, उसने बना के लाके रख दिया एक्सपेरिमेंट के लिए ताकि बच्चे यूज करें. लेकिन उसकी वैल्यू ही नहीं आ रही, उसका कलर ही नहीं आ रहा. व्हाई इट हैपन्स? बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन, म्यूटा रोटेशन. इट नीड्स 16 to 18 hours. In case of glucose, it needs 16 to 18 hours for complete mutation of this alpha into beta. And only beta D glucose is measured by the GOD POD method, glucose oxidase peroxidase method. उसके वजह से उस दिन कलर ही नहीं आए, ग्लूकोज के टेस्ट को कलर ही नहीं आए, बिकॉज स्टैंडर्ड का कलर ही नहीं था, क्योंकि वो अल्फा ओरिएंटेशन में था. सो दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. कंप्लीट फ्रॉम अल्फा टू बीटा, इट इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. चेंज फ्रॉम वन आइसोमर टू अदर, it is known as muta rotation. At the anomeric carbon, it is known as muta rotation. So these are the important points related with the isomers. कौन कौन से आइसोमर डिस्कस किए? स्टीरियो आइसोमर मतलब कैपिटल डी कैपिटल एल. फंक्शनल मतलब अल्डोज कीटोज मीन्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज. ऑप्टिकल आइसोमर मतलब
positive or negative sign, or small d and small l. Epimers means they differ around the single carbon other than the anomeric carbon. Example हमने discuss किए, glucose and mannose, they are epimers at the C2. This is MCQ. Glucose and mannose, epimers at C2 at carbon 2, and glucose and galactose at C4, they are epimers of each other. C4, ये फर्स्ट टर्म एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू रह सकता है. आप किसी को भी फर्स्ट टर्म एग्जाम में एमसीक्यू रह सकता है व्हाट ईपीमर से रिलेटेड. जैसे मैंने वीमैक्स और केएम पे भी बताया एंजाइम में कि आपको कौन से भी एग्जाम में रह सकता है, तो ये भी एक आपको एमसीक्यू रह सकता है ईपीमर्स. एनोमर्स, इट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड alpha D glucose, beta D glucose. Alpha when it is on the opposite side, when OH group is on the opposite side at the anomeric carbon, and when it is on the same side, it is beta D glucose. So this is about the isomers. This is about the isomers. Number of possible isomers given by the any compound. It depends on the number of asymmetric carbon. Number of asymmetric carbon. That is 2 to the power n बोलते हैं उसको. Number of n represents the number of asymmetric carbon. So number of possible isomer given by the glucose in the glucose structure. See the number of possible isomer. There are 4 asymmetric carbon, 1, 2, 3, 4. So 2 to the power 4 by the D glucose. By the D glucose. D glucose 16 देगा और L glucose 16 देगा. So number of possible isomers given by the D glucose, it is 16. It is 16. Okay. Now the important topic. The topic of discussion, important topic. Just wait. Glycosaminoglycan or heteropolysaccharide. एक ही कर दिया क्या मैंने? जस्ट वेट, देखने दो. हाँ, एक ही कर दिया. गुड ऑब्जर्वेशन. सो इट इज HOH. गुड ऑब्जर्वेशन. Mannose glucose are in the same. Okay, so this is all about the. Hi Shambhu, hi Yash, hi Soumya, Shivaji, Siddhant, Jerusha, बेनेडिक्ट रिएजेंट. काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट. ये वाइवा में भी काफ़ी बार पूछते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट. इट इज़ सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट क्योंकि कलर फॉर्मेशन से अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ शुगर कितना प्रेजेंट है वो पता चलता है बेनेडिक्ट टेस्ट में. GYOR, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. 0.5 gram percent, 1 gram percent, 1.5 gram percent, 2 gram percent. If it is color is brick red, it is more than 2 gram percent. Depending upon the sugar concentration, it is known as semi-quantitative test given positive by the non-reducing sugar. Predominantly non-reducing sugar is the glucose. Predominant sugar is the glucose. So diabetes, in case of diabetes, this test can be used as a bedside test for the early detection of the diabetes. Now the glycosaminoglycans. पहले हेट्रोपॉलीसैकेराइड. Same is known as mucopolysaccharides. Mucopolysaccharides. They are mucus in nature. They are slippery in action. They absorb the water. They are like a sponge. They are component of extracellular matrix.
तो heteropolysaccharide, when the number of sugar units they are more than 10, they are known as polysaccharide. And when the constituent sugar units, मतलब ये अलग अलग यूनिट से अगर बने हुए हैं, सेम शुगर नहीं है, जैसे होमोपॉलीसैकेराइड में सेम शुगर से बने हुए थे तो उनको होमोपॉलीसैकेराइड बोलते थे, यहाँ पे दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट sugar units. Some examples are there. The first one is the glycosaminoglycans. Glycans, also known as GAG, glycosaminoglycans. It is known as heteropolysaccharide. It is mucus in nature, that's why it is known as mucopolysaccharide. Second is the agar. अगार माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है प्लेटिंग मीडिया, बैक्टीरियल कल्चर मीडिया करके. सो अगार इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अगार रोज, agar rose it is composed of glucose and anhydro galactose, glucose and anhydro galactose, and it is used as a media in the electrophoresis technique for the separation of DNA, RNA and protein. DNA, RNA and protein. Agar can also be used for the electrophoresis. Then pectin. 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 It is a dietary fiber. Sorry. Pectin is a dietary fiber and it is a gelling agent. So these are the some examples of heteropolysaccharide. Agar, it is used for the it is used as a bacterial culture media. Agar rose, it is used for the electrophoresis. लिख देता है यहाँ पे. Culture media. बैक्टीरिया. माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल कॉलोनीज ग्रो करने के लिए अगार प्लेट बनाते और अगार प्लेट पे उसकी कॉलोनी स्प्रेड करते और उसको इनोकुलेट करने के बाद उसको रख देते इंक्यूबेशन के लिए. तो अगले दिन आपको कॉलोनीज दिखती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंक्यूबेशन टाइम कॉलोनीज दिखती है, और कॉलोनी के शेप से, उनके अपीयरेंस से पहचानते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा माइक्रोब है. ओके, सो कल्चर मीडिया, अगर दे आर यूज एज ए कल्चर मीडिया in the bacterial as a bacterial culture media. Agar rose, it is used for the electrophoresis, gel electrophoresis. It is used as a in the gel electrophoresis for the separation of DNA or protein. Pectin, it is gelling agent. It is dietary fiber. Okay, dietary fiber. Now the main is glycosaminoglycan, and the entire this is concentrated on the glycosaminoglycan. Glycosaminoglycan is nothing but the repeating disaccharide unit. Glycosaminoglycans, they are mucus in nature. This structure is like a sponge like structure. They absorb the water, so they are shock absorbent, they are lubricant, they are mucus in nature, they are slippery in nature because they are polyanions. They carries the negative charge, that's why they are slippery in nature. Now see glycosaminoglycans, GAG. So they are composed of repeating disaccharides, composed of repeating disaccharide. Here glycosaminoglycans, this name is because one component is amino sugar, and other component is the repeating disaccharide. So one is amino sugar, other component is mainly uronic acid. One exception is there, keratan sulfate is exception, and this is important MCQ. All the glycosaminoglycans, they contain uronic acid except answer is keratan sulfate. मैं बताऊंगा. So amino sugar, uronic acid. So like this is amino sugar.
अमाइनो शुगर, क्या लिख रहा, अमाइनो शुगर प्लस यूरोनिक एसिड, सो प्लस अमाइनो शुगर प्लस यूरोनिक एसिड, अमाइनो शुगर plus uronic acid, amino sugar plus uronic acid, and so on. So this is like structure. These are linear, these are not branched. Repeating disaccharide units, they are composed of repeating disaccharide unit. The disaccharide, it is made up of amino sugar and uronic acid. As it is composed of amino sugar, it is known as glycosaminoglycans, aminoglycans, because they are composed of amino sugar. Amino sugar is the major constituent. Now here amino sugar in the glycosamino structure, glycosaminoglycan structure, amino sugar is mainly glucosamine or galactosamine. Glucosamine means amino group is attached to the glucose, and galactosamine means amino group is attached to the galactose. Glucosamine, galactosamine is the amino sugar. Uronic acid is mainly D-glucuronic acid. D-glucuronic acid, and in some cases the epimer of D-glucuronic acid, that is L-iduronic acid. डोंट रिमेंबर द स्ट्रक्चर बट रिमेंबर द कंपोजिशन, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इस पे क्वेश्चन आता है कंपोजिशन पे. डोंट रिमेंबर द बॉन्ड्स, डोंट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, जस्ट रिमेंबर द कंपोजिशन. उसकी भी एक ट्रिक है. एक्सेप्ट केराटन सल्फेट, केराटन सल्फेट इज द एक्सेप्शन. केराटन सल्फेट इज द एक्सेप्शन. व्हाट आर द एग्जांपल्स? इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसामिनोग्लाइकॉन एग्जांपल्स आर, सी हाइलुरोनिक एसिड, HA मीन्स हाइलुरोनिक एसिड, लिखता हूं यहां पे. हाइलुरोनान भी बोलते हैं उसको, हाइलुरोनिक एसिड. देन कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, देन हिप्पैरिन, हिप्पैरान सल्फेट, हिप्पैरिन सल्फेट नहीं, हिप्पैरान सल्फेट, RAN, एंड द केराटन सल्फेट. केराटन सल्फेट का स्ट्रक्चर छोड़ दिया तो बाकी सबके स्ट्रक्चर उस हिसाब से ही है. रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट. दिस इज कॉन्ड्राइटिन, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट. दिस इज डर्मेटन सल्फेट. This is heparin, this is hipparan sulfate, and this is keratan sulfate. So these are the polyanions. They contain sulfate. They contain sulfate. They contain acetyl group. They contain carboxyl group. So these are the anionic group, negative charge. So they contain negative charge. Negative charge. They are polyanions. They contain negative charge. They are linear molecules. ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं रहता, लीनियर मॉलिक्यूल्स है. they contain negatively charged, and negative repulsion is there. That's why they are slippery and mucus in nature, and that's why they use as a shock absorbent or lubricant. So they are, because of this negative charge, they are slippery. They act as a lubricant, shock absorbent, lubricant, slippery, mucus. This is because of the negative charge. Because they are polyanions, they carry more negative charges. There is negative repulsion from each other. They act as a shock absorbent because they absorb the water, and they act like a जैसे smiley ball का example ले लो. So they act as a shock absorbent, they act as a lubricant, they act as a mucus. So these are the characteristics of this glycosaminoglycan. These are the important glycosaminoglycan. अभी structure कैसे याद रखने का? Now see in the structure, just wait. In the structure,
जिसका नाम एच से चालू हो रहा है, जिसका नाम एच से चालू हो रहा है, दिस इज न्यूमोनिक टू रिमेंबर, एंड केराटिन सल्फेट इज द कंप्लीट एक्सेप्शन। ये कंप्लीट एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑल कंटेन यूरोनिक एसिड एक्सेप्ट केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट कंटेन गैलेक्टोज। केराटिन सल्फेट को कंप्लीटली अलग पकड़ो। ये जो 5 है जिसके नाम में एच है, हाउ टू रिमेंबर द कंपोजिशन? द एच जो एच से चालू हो रहा, इट कंटेन ग्लूकोसमाइन, इट कंटेन ग्लूकोसमाइन, it contain glucosamine, and the all these contain D-glucuronic acid. D-glucuronic acid, some exceptions are there. For example, dermatan sulfate, heparin, some exceptions are there. Dermatan sulfate and heparin. Heparin also contain D-glucuronic acid, but it also contain L-iduronic acid. Dermatan sulfate, it is L-iduronic acid, not D-glucuronic acid. So सभी में जिसका नाम H से चालू होगा उसमें ग्लूकोसामाइन रहेगा, और डी ग्लूकोरोनिक एसिड सब में रहेगा, सिर्फ डरमेटन सल्फेट में नहीं रहेगा, इट इज यल आइडोरोनिक एसिड। और यूरोनिक एसिड केराटिन सल्फेट के स्ट्रक्चर में नहीं है, केराटिन सल्फेट कंप्लीट एक्सेप्शन है। हमने बोला था जिसका नाम एच से चालू होता उसमें ग्लूकोजामाइन रहेगा, लेकिन केराटिन सल्फेट में भी ग्लूकोजामाइन रहता है। दिस इज अबाउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन एक बार रिपीट होगा फिर से। फॉर एग्जांपल, हाइलुरोनिक एसिड, इट कंटेन ग्लूकोसामाइन, it contain glucosamine and D-glucuronic acid. Glucosamine and D-glucuronic acid. It is distributed in hyaluronic acid. It is distributed in synovial fluid and vitreous humor of the eye. कहाँ पे रहता? Synovial fluid and vitreous humor of the eye. एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, मतलब uses. Now see hyaluronic acid. Hyaluronic acid. The composition of hyaluronic acid is N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid. N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid. It is distributed in hyaluronic acid. It is distributed in synovial fluid and vitreous humor of the eye. Vitreous humor of the eye. And what is function? It is important function of this hyaluronic acid. It is shock absorbent, lubricant, then cell migration and wound repair. These are the functions of hyaluronic acid. Remember, wound repair के लिए 3 चीजें लगती है: hyaluronic acid, second one is the vitamin C, third one is the zinc. Zinc, vitamin C, hyaluronic acid. So these are the functions of hyaluronic acid. काफी सारे एडवर्टाइज भी आती है, कंटेन हाइलोरोनिक एसिड, सीरा, और वो ग्लो लाएगा एंड ऑल. सो हाइलोरोनिक एसिड, इट इज N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid. It is distributed in the synovial fluid and vitreous humor of the eye. The main functions: shock absorbent, lubricant, cell migration and wound repair. Cell migration and wound repair. This is about the hyaluronic acid. Now the chondroitin sulfate. There is no sulfate in the hyaluronic acid. No sulfate in the hyaluronic acid. This is important MCQ. Now chondroitin sulfate. Now this composition H से चालू हो रहा क्या? नहीं. So it is N-acetyl galactosamine. Galactosamine. Amino sugar is galactose plus D-glucuronic acid. D-glucuronic acid. Chondroitin sulfate, it is distributed in cartilage, bone and tendon. And it is responsible for shape and structure of these tissues.
shape and structure of these tissues, chondroitin sulfate. These together, hyaluronic and chondroitin sulfate, they are responsible for, with hyaluronic acid, important in compressibility of the cartilage. In weight bearing. In weight bearing, it is responsible for compressibility of the cartilage with hyaluronic acid. So this is important MCQ. This is important MCQ. So this is N-acetyl galactosamine plus D-glucuronic acid present in cartilage, bone and tendon, responsible for the shape and structure of this tissue with hyaluronic acid in the synovial fluid. It is important for the compressibility of cartilage during the weight bearing. So it is very very important. Chondroitin sulfate, hyaluronic acid, chondroitin sulfate, दो हो गए. Now the third one, dermatan sulfate. Dermatan sulfate. Here the composition of dermatan sulfate is N-acetyl galactosamine. H से चालू नहीं हो रहा तो galactosamine. Galactosamine plus the one exception is, that is L-iduronic acid. This is important MCQ. L-iduronic acid. It contain L-iduronic acid. जितना मुझे याद रह सकता उतना ही आपको बताऊंगा, उतना ही आप करो, उतना ही important है. Okay, L-acetyl galactosamine plus L-iduronic acid. This is C5 epimer of D-glucuronic acid. It is distributed in this dermatan sulfate. It is derma. Derma means क्या होता है? Derma. Derma. It is distributed in skin, heart walls, blood vessels. Skin, heart walls, blood vessel, dermatan sulfate is present. The important function of this dermatan sulfate is to maintain the shape and structure of these tissues. Shape and structure of these tissues. Shape and structure of these tissues. Apart from these, it is important in maintaining the structure of the eyeball. Maintaining the structure of eyeball, it is important. And with the keratan sulfate, it is important for the transparency of cornea. Main is keratan sulfate, transparency of cornea. This is major one. But along with the keratan sulfate, dermatan sulfate helps to maintain the transparency of cornea. Also, it is important to maintain the scleral structure of the eyeball, white of the eyeball. It is important. Dermatan sulfate. It is present in the skin, heart walls and blood vessels mainly. Important in shape and structure of these tissues. Dermatan sulfate. Then heparin, very very important. Heparin. This is an anticoagulant. Heparin. H से चालू हो रहा है. So it is N-acetyl glucosamine. Yes, just you can remember glucosamine. Glucosamine plus here there is L-iduronic acid or D-glucuronic acid, mainly L-iduronic acid, दोनों रहता है, D-glucuronic acid. This is composition. N-acetyl glucosamine plus L-iduronic acid or D-glucuronic acid, but this will dominate later on. This will dominate. L-iduronic acid is will dominate in the heparin structure. L-iduronic acid दोनों रहते हैं लेकिन L-iduronic acid ज़्यादा रहता है. Heparin. It is distributed in heparin. It is distributed in liver, lung, and blood. Also skin, liver, lung, blood, skin. It is distributed. Liver, lung, blood. Heparin. Also the mast cells, it is important, mast cells. So lung, liver, blood, the heparin is there. It is anticoagulant.
It is anticoagulant. This is important function. Anticoagulant. Heparin. It is present in extracellular fluid. Heparin, anticoagulant. And second important function of heparin is it causes release of lipoprotein lipase enzyme. LPL, lipoprotein enzyme, release of lipoprotein lipase enzyme from capillary endothelium. It causes release of lipoprotein lipase from the capillary endothelium. So this is all about the heparin. एक बार फिर से हम रिवाइज करने वाले हैं. Now heparan sulfate. See, heparan sulfate. Here composition is glucosamine plus D-glucuronic acid mainly, and in some cases L-iduronic. Some amount of L-iduronic acid is also there in the structure of heparan sulfate. It is present in glomerular basement membrane. It is present in glomerular basement membrane. Heparan sulfate present in glomerular basement membrane means kidney. It is present in the kidney. Heparin, it is present in the capillary endothelium. Capillary endothelium. And it is present in synaptic vesicles. Synaptic vesicles. Also it is present in the plasma membrane. Plasma membrane. And more important function of heparan sulfate is it is responsible for, now functions, इसके functions लिख रहे हम heparan sulfate functions. It is important for charge selectiveness of glomerular basement membrane. Selectiveness of glomerular basement membrane. Now heparin, this heparan sulfate, it is negatively charged. So it is negatively charged. It is very, very important. As it is negatively charged in the glomerular basement membrane, it will repulse the albumin. So albumin will not filter in the filtrate because of negative charge of the glomerular basement membrane because of heparan sulfate. Albumin is the low molecular weight compound. छोटा सा compound है. It can easily pass through the pores. Easily pass हो जाता है. लेकिन because of negatively charged glomerular basement membrane, because of the heparan sulfate, albumin normally does not passes into the urine. यूरिन में जनरली आता नहीं है. जब ये परमेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है इन सम डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, in that condition albumin appears in the urine. So it is important for the charge selectiveness of glomerular basement membrane. It is present in the capillary endothelium, and the lipoprotein lipase enzyme is attached to endothelium via heparan sulfate. It is attached to the capillary endothelium via the heparan sulfate. Then plasma membrane, it act as a receptors. Act as a receptors in the plasma membrane, and important in cell adhesion and cell-cell interaction. Cell adhesion and cell-cell interaction. These are the important functions of heparan sulfate. It is very, very important in the viva. What are the functions of heparan sulfate? It is important for charge selectiveness of glomerular basement membrane, जिसके वजह से albumin pass नहीं होता routinely. The lipoprotein lipase enzyme, it is anchored to the capillary endothelium with the help of heparan sulfate, and it acts as a receptor in the cell membrane. It is present, it acts as a receptor, and it is important in cell adhesion and cell-cell interaction. So these are the important roles of heparan sulfate. Then the keratan sulfate, it is easy. Keratan sulfate, it is N-acetyl glucosamine plus galactose. This is MCQ, galactose plus galactose. This is MCQ, no uronic acid.
no uronic acid. Keratin sulfate, it is present in the cornea and cartilage. दो टाइप रहते हैं इसके, कार्निया एंड कार्टिलेज. So main role is transparency of cornea. Transparency of cornea, it is mainly because of cornea मतलब कॉर्निया मतलब जो ब्लैक ऑफ आई दिख रहा है आपको, दैट इज कॉर्निया. जो ब्लैक दिख रहा है वो कॉर्निया, उसके बाजू में जो व्हाइट है वो स्क्लेरा, उसके बाजू में व्हाइट है वो स्क्लेरा, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है पूरे दोनों के ऊपर. इट इज कंजंक्टाइवा, इट इज कंजंक्टाइवा. ठीक है, ऊपर की फिल्म जो है उसको कंजंक्टाइवा बोलते हैं. उसके पीछे में जो ब्लैक है सर्कल, दैट इज कॉर्निया, और उसके बाजू में जो व्हाइट है पूरा, दैट इज स्क्लेरा. सो स्क्लेरा के लिए इंपॉर्टेंट है डर्मेटन सल्फेट, कॉर्निया के लिए मेन है this keratin sulfate and dermatan sulfate also. So transparency of cornea and cartilage, it is also important. Cartilage, keratin sulfate too, it is present in the cartilage. So these are the important glycosaminoglycans. Once again we will revise this. See, hyaluronic acid, hyaluronic acid. So these glycosaminoglycans, these are repeating disaccharides, repeating disaccharides. दे आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड. एक अमाइनो शुगर रहेंगी, दूसरा यूरोनिक एसिड रहेगा. अमाइनो शुगर या तो ग्लूकोसामाइन रहेगी या तो गैलेक्टोसामाइन रहेगी. ओके, और यूरोनिक एसिड जो रहेगा वो डी ग्लूकुरोनिक एसिड रहता है मेनली. इन सम केसेस इट इज यल आइडोरोनिक एसिड विच इज इपीमर ऑफ C5 इपीमर ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड. नाउ हाइलुरोनिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूकुरोनिक एसिड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन synovial fluid, synovial fluid and vitreous humor of the eye mainly. Okay, it acts as a lubricant, shock absorbent. It is important in cell migration and wound repair, cell migration and wound repair. Hyaluronic acid. Chondroitin sulfate, chondroitin sulfate, it is present in the cartilage, bone and tendon, cartilage, bone and tendon mainly. Chondroitin sulfate, the composition is N-acetyl galactosamine, so it is galactose sugar here, and D-glucuronic acid. Cartilage, bone and tendon, it is important for the shape and structure of this tissue. Also it is important in compressibility of the cartilage in weight bearing along with the hyaluronic acid. This is important MCQ. This is line to line from the Harper. This topic is best given in the Harper. This is line to line from the Harper. Compressibility of the cartilage in the weight bearing along with the hyaluronic acid. Then dermatan sulfate, derma, skin, N-acetyl galactosamine. जहाँ पे blank छोड़ा है मतलब वो important है. Now see, N-acetyl galactosamine plus L-iduronic acid. Iduronic acid. It is present in skin, heart valves and blood vessels and sclera. It is important for the shape and structure of this tissue. It is important for the structure of the sclera. Also it is important for the transparency of cornea along with the keratin sulfate, dermatan sulfate. Okay. Then heparin, N-acetyl glucosamine plus L-iduronic acid mainly, and some cases it is, मतलब दोनों रहते हैं लेकिन ये 90% रहेगा, ये 10% रहेगा, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत वैरी होगा, लेकिन मेनली इट इज यल आइडोरोनिक एसिड. इट इज प्रेजेंट इन लंग, लीवर, ब्लड, मास्ट सेल्स एंड स्किन. इट इज एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोएगुलेंट हिपेरिन, इट इज एंटीकोएगुलेंट, कोएगुलेशन होने नहीं देगा, anticoagulant, and it causes release of enzyme lipoprotein lipase. So this is important function, anticoagulant. Which of the following glycosaminoglycan is an anticoagulant? Answer is heparin. Then heparan sulfate, it is N-acetyl glucosamine plus D-glucuronic acid and L-iduronic acid. It is present in the basement membrane, capillary endothelium, synaptic vesicle. Negative charge on the glomerular basement membrane. Attachment of lipoprotein lipase to the capillary endothelium. It is present in the plasma membrane. It acts as a receptor and it participates in the cell adhesion and cell-cell interaction. That is heparan sulfate. And keratin sulfate, it is N-acetyl glucosamine plus galactose.
plus galactose. It is present in cornea and cartilage. सारे connective tissue में रहते. Connective tissue means extracellular matrix, ground substance, also known as ground substance, also known as extracellular matrix. They are component of extracellular matrix. So keratin sulfate, it is important for the transparency of cornea and shape of the cartilage. Now see some MCQs we'll discuss. Answer these MCQs. Glycosaminoglycan present in cornea. Which is most suitable answer here? Most preferable answer? Hello everyone, good evening to all of you. विश्वास, यश, विश्वास ने क्या बोला? बी. शिवाजी, यश, श्रद्धा. Glycosaminoglycan present in cornea. The most suitable answer here is, hi Anshu, hi Medansh. Here the answer is keratin sulfate. Answer is keratin sulfate. It contains both keratin sulfate and dermatan sulfate. The major is keratin sulfate. Keratin sulfate is responsible for the transparency of the cornea. Keratin sulfate, transparency of the cornea. If keratin sulfate is not in the option, go with the dermatan sulfate. If it is not in the option. So hi Nirupam, hi Diya. So keratin sulfate is the answer. So now ready for the next MCQ. Mucopolysaccharide that does not contain uronic acid residue is. These are the important first term में रहेंगे आपको. Mucopolysaccharide that does not contain uronic acid residue is. केराटिन सल्फेट नहीं है, केराटान सल्फेट, TAN. केराटिन अलग कंपाउंड हो गया, वो प्रोटीन हो गया. हाय केशव, ऋषिता, ध्रुबा, मोहम्मद उमेर. अरे चेंज हो गया, जस्ट वेट. Mucopolysaccharide that does not contain uronic acid residue is sub D. निरुपम B बोल रहा है. क्या है? heparin. Does not. Heparin contain N-acetyl glucosamine and D-glucuronic acid and L-iduronic acid. दोनों यूरोनिक एसिड है. दोनों यूरोनिक एसिड है. ठीक है. Which do not contain uronic acid is, yes, option D is correct. Keratin sulfate, N-acetyl glucosamine plus galactose is there in the keratin sulfate structure, plus galactose. Correct, D option is the correct option. Mucopolysaccharidosis, which is a lysosomal storage disease, occur due to abnormality in. जब ये ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स को हम डिग्रेड नहीं कर सकते, these are the glycosomal means these are the hydrolases group of enzyme. इसका मैं ही बता देता हूँ. These are the hydrolases group of enzyme. Hydrolases, when they are not digested by the hydrolases due to mutation in the gene which codes for that hydrolases enzyme, that causes the multi-system involvement. Multi-system involvement होता है, and that involves the liver, spleen, cornea, sclera, retina, सर से लेके पाव तक सब इन्वॉल्व हो जाता है. So that these disorders are known as mucopolysaccharidosis. These disorders, they are known as mucopolysaccharidosis. Now see how it is structure of this glycosaminoglycans. So see, this is structure. This is a structure. This is hyaluronic acid, HA. This is hyaluronic acid. To this hyaluronic acid, there is attached core protein. These are core proteins. These are core proteins. Okay, white color से जो निकला है core protein. It gives the proteoglycan monomer. Proteoglycan जो है
में 95% तक कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटियोग्लाइकॉन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटियोग्लाइकॉन। ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकॉन में फर्क है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है वो मोर देन 95% रहता है, प्रोटीन कंटेंट लेस देन 5%। और ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन इज द मेन कंपोनेंट, प्रोटियोग्लाइकॉन। दिस इज a part of extracellular matrix. Now in this proteoglycan monomer structure, this is aggregation of proteoglycan, this is aggregation of proteoglycan, this is monomer, one unit. Hyaluronic acid is the major here, and here is the core protein, means the link protein to this core protein is attached, link protein to which core protein is attached. With the help of this it is attached, this is link protein, and line जो है that is core protein, so this is core protein. And to this core protein there is attachment of GAGs, different GAGs, they are attached to this core protein. For example, see this, this is proteoglycan monomer, मोनोमर उसमें जो रहता, सपोज दिस इज chondroitin sulfate and this is, suppose this is keratin sulfate, like this. So glycosaminoglycans, they are attached to the core protein, protein is attached to the hyaluronic acid, it is proteoglycan aggregates, it looks like this structure, पूरा ऐसा, पूरे सबको ऐसा निकालना है, okay. So this is monomeric unit, so proteoglycan monomer, it is bottle brush shape, बॉटल धोने का ब्रश जो रहता है ना, बॉटल ब्रश इन शेप। और ये ब्रश के जो ये रहते, क्या बोलते हैं उसको, तिनके या जो फाइबर्स रहते, दैट इज ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन, दैट इज ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन, इट इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इट इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, hyaluronic acid, there is no sulfate in the hyaluronic acid, there is no sulfate in the hyaluronic acid, it is present in the synovial fluid, important MCQ. Chondroitin sulfate and hyaluronic acid, they are responsible for the compressibility of the cartilage. Dermatan sulfate, it is important in the scleral structure, along with the keratin sulfate, it is important for the transparency of cornea. Dermatan sulfate, it is, the content is N-acetyl galactosamine plus L-iduronic acid, this is important MCQ. L-iduronic acid, composition of dermatan sulfate, N-acetyl galactosamine plus L-iduronic acid. Heparin, anticoagulant, heparin, anticoagulant. Heparan sulfate, it acts as a cell surface receptor and participate in cell adhesion and cell-cell interaction, important MCQ. It is responsible for negative charge on the glomerular basement membrane, important MCQ, important viva question. Negative charge of glomerular basement membrane. Keratin sulfate, it contains N-acetyl glucosamine plus galactose, N-acetyl glucosamine plus galactose, it is important for the transparency of cornea. Keratin sulfate के दो type है, keratin sulfate 1 and 2, 1 is for the transparency of cornea, 2 is for the structure of the cartilage, structure of the cartilage, okay. और इससे रिलेटेड जो इनको डिग्रेडेशन में जो एंजाइम्स है उससे रिलेटेड कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, मीन्स डिफेक्टिव हाइड्रोलेजेस, जैसे ये क्वेश्चन था, डिफेक्ट इन हाइड्रोलेजेस इट कॉजेज द डिसऑर्डर्स दैट इज नोन एज म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। ये हाइड्रोलेज के डिफिशियंसी से क्या होता है, ये जो ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स है ये डिफरेंट टिश्यूज में जब जमा हो जाएंगे उसको बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस एमपीएस। उसमें के पहले दो इंपॉर्टेंट है, हर्लर एंड हंटर। हर्लर लाइक फेमाइन नाम है, हर्लर इज ऑलवेज फर्स्ट, तो रिमेंबर द टाइप 1 इज हर्लर डिसीज एंड टाइप 2 इज द हंटर डिसीज, हर्लर एंड हंटर, हर्लर एंड हंटर। और एक याद रखना है, हंटर नीड्स विजन, हंटर नीड्स विजन, हंटर को विजन लगता है, दिखने को ना उसको गोली चला रहा तो उसको दिखने को ना, तो हंटर नीड्स विजन, तो देर इज normal cornea, no cloudy cornea in the hunter's disease. This is only differentiating feature between hurler and hunter. The
क्लियर कॉर्निया। हंटर का कॉर्निया जो रहता है क्लियर रहता है। इफ यू डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस डिफरेंट ग्लाइकोसमिनो म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, जस्ट राइट डाउन म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस आप लिखो, हर्लर ऑब्लिक हंटर, हर्लर और हंटर सिंड्रोम, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना नहीं आता। लेकिन क्लियर कॉर्निया है तो हंटर डिसीज, हेजी कॉर्निया है तो हर्लर डिसीज। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट दोनों में रहता, शॉर्ट स्टेचर दोनों में रहता, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली दोनों में रहता, स्केलेटल डिफॉर्मिटी दोनों में रहता, फेशियल कोर्स फेसिस मतलब आड़ा टेढ़ा चेहरा, कोर्स फेसिस दोनों में रहता है। ओनली डिफरेंशिएटिंग फीचर इज द क्लियर कॉर्निया इन द हंटर डिसीज। हंटर, हंटर को एक्स लगती है, हंट करने के लिए एक्स लगती है, सो इट इज एक्स लिंक। हंटर इज द एक्स लिंक, हर्लर इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ओके, ये मैं दूंगा, जस्ट वेट। सो ये पूरा क्लासिफिकेशन है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस का। आप इसमें से कुछ भी याद मत रखो, सिर्फ ये दो याद रखो, फर्स्ट एंड सेकंड, सिर्फ दो याद रखो, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम। ये दो डिसीजेस है, हर्लर एंड हंटर। ये हर्लर थोड़ा सा फेमाइन नेम लगता है इसलिए इट इज फर्स्ट, शी इज ऑलवेज फर्स्ट, सो हर्लर इज ऑलवेज फर्स्ट, सो हर्लर इज द फर्स्ट म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, दिस इज सेकंड। और इसमें दूसरी चीज याद रखनी है, द एंजाइम, डिफेक्टिव एंजाइम, दिस कैन बी एमसीक्यू, यल आइडुरोनिडेज एंड आइडुरोनेट सल्फेटेज। ये दो एंजाइम के नाम याद रखो, आइडुरोनिडेज एंड आइडुरोनेट सल्फेटेज। अगर इनका डिफेक्ट रहा तो ये जो है कौन सा, डर्मेटन सल्फेट एंड हिपेरन सल्फेट एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जब जब हिपेरन सल्फेट एक्यूमुलेट हो जाता, इट कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन, इट कॉजेज द मेंटल रिटार्डेशन। मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, हर्लर में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है देख लो, और हंटर में कौन सा डेफिशिएंट है देख लो, आइडुरोनिडेज, आइडुरोनेट सल्फेटेज, आइडुरोनिडेज, आइडुरोनेट सल्फेटेज। हंटर रिक्वायर्स एक्स फॉर किलिंग, सो इट इज एक्स लिंक, और उसको विजन चाहिए इसलिए क्लियर कॉर्निया। ये दो चीजें याद रखो हंटर के लिए। ओके, हर्लर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम, टाइप 1 टाइप 2, ये दो ही याद रखना है, आगे बहुत सारा है, ये देखो, ये कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ दो याद रखो, हर्लर एंड हंटर। ओके, नाउ सी द फीचर्स, मेंटल रिटार्डेशन, कोर्स फेसिस, कॉर्नियल क्लाउडिंग मतलब हेजी कॉर्निया, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, स्केलेटल डिफॉर्मिटी, शॉर्ट स्टेचर। यहाँ पे भी देखो, मेंटल रिटार्डेशन, कोर्स फेसिस, नो कॉर्नियल क्लाउडिंग मींस क्लियर कॉर्निया, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, स्केलेटल डिफॉर्मिटी, शॉर्ट स्टेचर, स्किन लीजन्स, सब मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट रहता है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ दिस डर्मेटन सल्फेट एंड हिपेरन सल्फेट। सिर्फ इसमें कॉर्निया इन्वॉल्व नहीं होता है, क्लियर कॉर्निया रहता है हंटर में। ओके, सो दिस इज ओनली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन दिस टू, these are the different features. Hurler is mucopolysaccharidosis 1, this is mucopolysaccharidosis 2. Iduronidase deficiency, this is iduronate sulfatase deficiency. Then the features are same, hepatosplenomegaly, ugly face means coarse faces, corneal clouding, mental retardation, short stature, skeletal deformity, and this inheritance is autosomal recessive in case of the Hurler. So this is differentiating point, then this is differentiating point, this deficiency differentiating point, it is MPS 1, it is MPS 1. This is MPS 2, iduronate sulfatase deficiency, there is no corneal clouding, it is X-link recessive. These are the differentiating features. बाकी सब फीचर जो लगभग सेम रहते, हर्लर एंड हंटर। ओके, केस कैसे आती है, केस A 4-year boy with mental retardation, dysostosis multiplex मतलब skeletal abnormalities and multisystem involvement, coarse facial feature, clear cornea. What is the diagnosis? यहाँ पे clear cornea दिया है तो आप you can go with the hunter, you can go with the hunter disease, hunter disease. Okay, like this. So ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो ही इंपॉर्टेंट है, ये दो ही याद रखो, बाकी के याद मत रखो, कोई काम का नहीं है, कुछ काम के नहीं है, इतने सारे याद भी नहीं रख सकते आखिरी तक, और याद रखो भी मत, उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, सो 5 नहीं है, देर इज नो 5 इन द एमपीएस, देर इज 6 एंड देर इज 7 डायरेक्ट।
So this is all about the glycosaminoglycan. This is all about the isomers of the monosaccharides. This is all about the carbohydrate chemistry. Now we are starting the carbohydrate metabolism. Important topic, very very important topic from the next lecture. So today we discuss the different glycosaminoglycans. At least पूरा बंद करके just try to remember how many examples are there in the glycosaminoglycan. Hyaluronic acid, the chondroitin sulfate, dermatan sulfate, देन हिपैरन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, और एक छूट गया, कौन सा छूटा, हिपैरिन ओके। और उनके फंक्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका कंपोजिशन थोड़ा सा लिख के देखो, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आएगा ओके। क्या प्रैक्टिस करना है, उनके नेम, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकॉन्स के नाम, कौन कौन से एग्जाम्पल थे, नाम लिखने का यहाँ पे, हाइलोरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्मेटन सल्फेट, हिपैरिन, हिपैरन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं पहले कंपोजिशन, कंपोजिशन ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, देन फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ओके। हाइलुरोनिक एसिड कंपोजिशन मैंने पहले ही बताया, जिसका नाम एच से चालू होता है इसमें ग्लूकोजामिन रहेगा, और केराटिन सल्फेट सब एक्सेप्शन है, इसमें नहीं रहेगा। तो H से चालू होता तो एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन इज द फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड इज द डी ग्लूकोरोनिक एसिड। सिर्फ डर्मेटन सल्फेट में यल आइडोरोनिक एसिड है, और हिपैरिन और हिपैरन सल्फेट में दोनों है, यल आइडोरोनिक एसिड, डी ग्लूकोरोनिक एसिड अलॉन्ग विद द ग्लूकोसामाइन। केराटिन सल्फेट का कंपोजिशन है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन प्लस गैलेक्टोज। डिस्ट्रीब्यूशन, हाइलुरोनिक एसिड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइनोवियल फ्लूइड, विट्रियस ह्यूमर, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, cartilage, bone, tendon, dermatan sulfate, skin, heart valves, blood vessels, heparin, blood, lung, liver, mast cells, skin. Heparin sulfate, kidney means glomerular basement membrane, capillary endothelium, and plasma membrane, that is act as a surface receptor. And keratin sulfate, cornea and cartilage. फंक्शन, हर एक के फंक्शन, हाइलुरोनिक एसिड शॉक एब्सॉर्बेंट, लुब्रिकेंट, सेल माइग्रेशन, वुंड रिपेयर, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज, बोन एंड टेंडन, डर्मेटन सल्फेट शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वॉल्स, ब्लड वेसल्स, स्किन, in case of dermatan sulfate also sclera. Heparin anticoagulant, heparin sulfate, it is charge selectiveness of glomerular basement membrane. Then the lipoprotein lipase enzyme anchored to the capillary endothelium with the help of heparin sulfate, and it acts as a cell surface receptor. Keratin sulfate, cornea, corneal transparency, and cartilage. Important MCQ: no uronic acid, keratin sulfate. Yellow hydronic acid is mainly present in dermatan sulfate. Then no sulfate group, hyaluronic acid. Compressibility of the cartilage, hyaluronic acid, chondroitin sulfate. Anticoagulant, heparin. Charge selectiveness of the glomerular basement membrane, heparin sulfate. Corneal transparency, keratin sulfate. These are the important MCQs. तो इसका एक चार्ट बनाओ, आप लोग अपने खुद के लिए एक चार्ट बनाओ, कुछ दिनों के लिए उसको मिरर के बाजू में चिपका दो ओके। दैट विल मतलब आपका रिटेंशन बढ़ेगा उससे। सो दिस इज all about the discussion of glycosaminoglycans. This is all about the discussion of chemistry of carbohydrate. सी वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू एनएमसी कॉम्पिटेंसी, जो कि फॉलो होना चाहिए हर कॉलेजेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।